Dharamasala. Yes. That's all. If you run on this side, I'll run the rider. Tempted just to give this a bit of air just to see if the eyes light up and you can get that 6th wicket. That's it. Floated up there. His greatest asset is his change of pace. Yes, very good at it. Yeah, 90.8 and then 94. Yeah, a looped up delivery, 77 kilometers an hour, and it just continued for him. Great variation, speed variation, length variation as well. Left a big gap over mid-on here to hit across the line. Yes, Mitchie. Will Duck be tempted to take it on? Well, Sapner had a few injuries just recently. Saw his knee was strapped up this afternoon. I feel still sort of struggling a little bit. He's been out of side for a bit. But him coming back in the side has really glued the team quite nicely. Nearly. You can see what he was trying to attempt there, but it did not come to fruition, although it was a very fruitful spell. 10 overs, 5 for 59, and it's 212 for 8. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनो। आए बनाएं लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। Six bowlers used for New Zealand, just the 2 overs for Glenn Phillips. Relatively tidy, went for 11. Mitchell Santner has bowled out his 10, as has Rachin Ravindra. 5 and 1 respectively. Henry's back, he picked up 1 for 34. Advancing, Henry takes pace off. They might push for 2 here. It's a good bit of fielding, but I think the running is equally as good. That's electric movement out in the deep. So fast coming off the boundary. Pick up, throw, releases so quickly. And touch a bit of long break between now and their next game up in Dharamshala. In form South African side. Spare a thought for the way the Dutch defeated South Africa in Adelaide in the T20 World Cup at the end of last year. Oh. Good pace-off delivery from Henry. Nothing to work with at all for Engelbrecht. He's been good. He's been okay, Engelbrecht. Good and organised, busy as a number 7. Extremely fit. You'll think there's a partnership between him and Scott Edwards at some stage where they'll boggle the mind at how fast they can run between the wickets, which will be exciting to see. But all in all, the Dutch just need to put together a complete game. They need to
be able to compile a total without having lapses or middling scores from a number of their players. When you're in, you've got to go big. Haven't been able to do that so far. So too with the ball. Do I duck? Do I pull? I'm just going to stand and nurdle this around the corner. The ball today, I think they were a little guilty times of having a couple of good overs and then releasing the pressure with a couple of bad balls. You look at that comparison between them and some of the good sides, like we're seeing with New Zealand tonight. Excellent work from Devon Conway out on the boundary. Look at this New Zealand bowling effort. Hardly see bad balls. And you're asking the Dutch players to hit good bowling to the fence. Of course, every bowler bowls a bad ball every now and then. But the Dutch seem to do it today a little bit too often. Straight to the man, it's Conway, and he takes a very good catch. Made it look easy, wasn't far off the ground. And Matt Henry's got another. It's good planning, good execution, though, because that's the big side of the ground. You can see how far he was in off the boundary when he took the catch. You've got to hit it well, hitting it over there. And he couldn't keep it down. Yeah, a very good camera angle. Terrific camera work. Good hands. It's a promising knock for the rest of the tournament. 29 to Sibrand to 18 for 9. The all-new Sabroso Crispy Chicken Strips taste so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनो। आए बनाएं लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। 9 down. Just lost Engelbrecht to a good catch from Devon Conway, and Matt Henry's picked up his second wicket. 2 for 40 from 8. He was very good against England. 3 wickets in that opening encounter against England. And Lockie Ferguson is back. Been tidy without being at full pace tonight, Lockie Ferguson. Over the coming days, the Dutch have got a few days off now, all the way until the 17th before their next game. So a team that love to train. It's almost going underground. They train so often, they love training so much. Sometimes you have to be forced not to train. This is an excellent catch for a number of reasons. Most important being, look how low that is to the ground. It's so easy to parry that. Chipped it over the head of Mitchell Santner. One thing I will say, Dirk Nannes and Ian Bishop alongside. Sure you've been to Dharamshala, Dirk? I know, Bish, you have, and I've spent a lot of time up there. If they want some days off, they couldn't be going to a better place. Get yourselves up into the mountains, clear your head for a couple of days. There's amazing treks. The air up that part of the world, we were there just 2 days ago, is absolutely unbelievable. Chipped, and Ferguson can't get there either. I think he's got a bit of cramp. I think there must be a little bit of cramp or something maybe for Ferguson. Went to take off and went nowhere. Done him like a kipper.
It's come back, and I wonder if he... Oh, no, he was no chance to get that. Clever, very clever. Number 11. Anything you top order blokes can do, I can do as well. It's very good. Because I was thinking in my mind as Ferguson ran in, go up a stumps, go Yorker. And I think Van Meekeren anticipated the same thing. He did go up a stumps. That's a good shot. Brave shot. He had a run-in with Harris Ralph, didn't he, in the previous game? Hasn't got a hold of that one at all. 46 gone, 223 for 9. But it wouldn't be a bad thing, Dirk, I think, just to have a couple of days. It's your time to shine. Show your glow. Golden Pearl Whitening Soap for all skin types. Love your skin. And he dropped it! ये तो मैं बंद आंखों से पकड़ लूं। मौसमी एक्सपर्ट जोंग पर कमेंट्री चलती रहे 200 GB डेटा 2000 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 1600 रुपए में। Ominous task, an impossible task from now. Once again, the Dutch will walk away thinking, oh, maybe yeah, at times we thought, oh, were they dared to dream, but just been clinical from New Zealand. Done nothing wrong at all. They've compiled an excellent score. 322 was always going to be too much. And they ticked a whole lot of boxes. Young getting runs at the top of the order saying, your move, selectors. What are you going to do next? And I said it earlier, I think, in Bishop, they summed up the surface quite well. They didn't go overly aggressive because I think they realised quite early on that it wasn't that easy. Yeah, typical New Zealand, though. Very cerebral in their approach to the game. And that will wrap things up. Henry rips a Yorker through. Arian Dutt, he picks up 3 for 40. The backup is 3 in the first game. And New Zealand have been clinical, polished, and they go back-to-back to start this 2023 edition of the ICC Men's Cricket World Cup. Wins over England, and now a 99-run win over the Netherlands. Beautiful delivery to finish it off. You look through the New Zealand lineup, and no one really had a big off day. There were no. The all-new Sabroso Crispy Chicken Strips taste so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips, so crispy, so tender. Pretty happy, I would think. The bench, Kane Williamson, who New Zealand will be hoping to be back for the Bangladesh encounter in a few days' time. Santner got the match ball given to him, did he, from the umpires? Did I just see that? Take that away with you. Pretty happy. All played in good spirits, as most of these games generally are. Bench come off and some high fives and handshakes.
Magnus Edwards. Couple of LBWs. And Mitch Santner, 5 for 59 from 10 overs. New Zealand on the back of half centuries from Will Young, the captain Latham and Rachin Ravindra, and a 48 from Daryl Mitchell. Posted 322 for 7. Rolla van der Merwe, Paul van Meekeren and Arjen Dutt with a couple of wickets apiece. And the Netherlands in reply all out for 223. Ackerman 69, Edwards 30, Engelbrecht and Nidamanuru. Santner with 5, Henry with 3 for 40, and Rachin Ravindra 1 for 46 of his 10 overs. All right, let's go sideline to Sanjay Mandraker. A player of the match, Mitchell Santner. We've got Katie Martin presenting that award to Mitchell Santner. What an all-round performance. 5 for 59, a cameo of 36 of 17 balls. Terrific night for you. Yeah, not too bad. I think obviously credit to the boys up front with the bat. You know, they gave us a good platform, but I guess a couple of late poles, but it was nice to get to 320, and then we knew that it would skid on a little bit under lights, but you know, we contained them and bowled well. You bowled your 10 overs against England as well, 2 for 37, so there's a lot of bowling that's needed from Mitchell Santner for New Zealand in this 50 format. Yeah, I guess the nature of the surfaces. It was obviously nice tonight. There was a little bit of purchase. Didn't bowl my best, to be fair, but it was nice to get the rewards, and I think as you know, as a partnership, we hung in. They had some good partnerships, but we managed to, you know.
पर पहली विकेट में जैसे कि सूरत में गिरी 43 के स्कोर पर। तरतालीस के स्कोर पर दाऊदी की सूरत में हमें दूसरी विकेट गिरते हुए नजर आई। 67 स्कोर पर डीडी की सूरत में हमें तीसरी विकेट गिरते हुए दिखाई दी। 117 के स्कोर पर निजाम नूरू के सूरत में हमें चौथी विकेट गिरते हुए दिखाई दी। 157 के स्कोर पर 157 के स्कोर पर अकेलेमन की सूरत में हमें 5वीं विकेट गिरते हुए दिखाई दी है। 174 के स्कोर पर एडवर्ड्स की सूरत में हमें छठी विकेट गिरते हुए दिखाई दी है। 180 के स्कोर पर रविंदर की सूरत में हमें 7वीं विकेट गिरते हुए दिखाई दी है। 198 के स्कोर पर कलीन की सूरत में हमें 8वीं विकेट गिरते हुए दिखाई दी है। 218 के स्कोर पर हमें इंग्लिश ब्रैक की सूरत में 9वीं विकेट गिरते हुए दिखाई दी है। टेट की बात की जाए तो 223 के स्कोर पर टेट की सूरत में हमें 10वीं विकेट गिरते हुए दिखाई दी गई है। या दोस्तों अगर बॉलिंग की बात की जाए न्यूजीलैंड की तो आज बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी रही है टीम न्यूजीलैंड की। बोल्ट ने 8 ओवर करवाए, 34 रन दिए और विकेट लेने में नाकाम रहे। हेनरी की बात की जाए तो हेनरी ने 8.5 ओवर करवाए, 40 रन दिए और 3 विकेटों को किया है अपने नाम। सैंडर की बात की जाए तो 10 ओवर करवाए, 59 रन दिए और 5 विकेटों को किया है अपने नाम। अल्फ्रेड की बात की जाए तो 8 ओवर करवाए, 32 रन दिए और विकेट लेने में नाकाम रहे। रविंदर की बात की जाए तो रविंदर ने 10 ओवर करवाए, 46 रन दिए हैं, 1 विकेट को किया है अपने नाम। फिलिप्स की बात की जाए तो फिलिप्स ने 2 ओवर करवाए, 11 रन दिए और विकेट लेने में नाकाम रहे। या दोस्तों कहीं मत जाइएगा, अब हम आपको बताने लगे हैं कि हम आपको किन किन मैचेस में लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए दिखाई देंगे। या दोस्तों हम आपको कल के मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान जो कल मैच खेला जाएगा, हम इसमें भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए दिखाई देंगे। अगर बात की जाए 11 तारीख को हम आपको इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच की स्ट्रीमिंग लाइव करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाले मैचेस में आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकें। या दोस्तों आपको लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच खेला जाना है 12 तारीख को, इसमें हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए दिखाई देंगे। या दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, फिर ही आप हमारे चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। अगर उसके बाद दोस्तों बात कर ली जाए टीम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, जो कि ये मुकाबला 14 तारीख को खेला जाएगा। कांटे का मुकाबला देखने को मिल जाएगा हमें, ये मैच 14 तारीख को देखने को मिलेगा। इसमें भी हम दोस्तों आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए दिखाई देंगे। इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान की बात की जाए तो जो कि ये मुकाबला 15 अक्टूबर को होने वाला है, इसमें भी हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग हमारे चैनल की देखने को मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका की बात की जाए जो कि ये मुकाबला 16 तारीख को खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मुकाबला 16 तारीख को खेला जाएगा। इसमें भी हम आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए देख सकते हैं। अगर 17 तारीख की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड के मैच में भी हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए दिखाई देंगे। 18 तारीख की बात की जाए तो न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए दिखाई देंगे। 19 तारीख की बात की जाए तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में भी हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए दिखाई देंगे। और अगर 20 तारीख की बात की जाए तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है हमें एक बार फिर 20 तारीख को
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, हमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 20 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम इस मैच में भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नए आने वाले मैचेस में आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें और लाइव स्ट्रीमिंग देख सकें। या दोस्तों, अगर रैंकिंग की बात की जाए तो रैंकिंग के बारे में आपको बता दें। या दोस्तों, अगर रैंकिंग की बात की जाए तो नीदरलैंड के मैच 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 2 इन्होंने जीते हैं और 1 को ड्रा किया है। या दोस्तों, अगर रैंकिंग की बात की जाए तो नीदरलैंड ने 3 मैच खेले हैं, 2 इन्होंने जीते हैं और 1 को इन्होंने लॉस कर दिया है। अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स 7 हैं टीम नीदरलैंड के। नंबर 2 पर सेनेगल टीम की बात की जाए, सेनेगल टीम ने 3 मैच खेले हैं, 2 मैचों को जीत लिया है और 1 मैच को लूज किया है। और अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट 6 हैं सेनेगल की टीम के। इक्वाडोर टीम की अगर बात की जाए तो इन्होंने 3 मैच खेले हैं, 1 मैच इन्होंने जीता है, 1 इन्होंने ड्रा किया है और 1 मैच को इन्होंने लूज किया है। अगर पॉइंट की बात की जाए तो इक्वाडोर के पॉइंट्स 4 हैं। नंबर 4 पर अगर बात की जाए तो ग्रुप ए की चौथी टीम की बात की जाए तो चौथी टीम ने ये 3 के मैच इन्होंने टोटल 3 खेले हैं, तीनों के तीनों ही इन्होंने लॉस किया। जहाँ बिल्कुल दोस्तों, तीनों के तीनों ही मैच इन्होंने लूज कर दिए हैं और इनके पॉइंट अब 0 हैं। अगर बात कर ली जाए ग्रुप बी की तो ग्रुप बी इंग्लैंड सबसे पहले टीम इंग्लैंड की बात कर ली जाए तो टीम इंग्लैंड ने 3 मैच खेले हैं, टोटल 2 को किया है इन्होंने, यानी कि 2 को इन्होंने जीता हुआ है और 1 को इन्होंने ड्रा किया है। और अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स इनके 7 हैं। दूसरी टीम की बात की जाए तो यूएसए दूसरे नंबर पर है, 3 मैच इन्होंने टोटल खेले हैं, 1 को इन्होंने जीता है और 2 को इन्होंने लूज कर दिया है। और पॉइंट्स की बात की जाए तो इनके पॉइंट्स 5 हैं। नंबर 3 पर जो अगर टीम देखी जाए तो ईरान है, ईरान के कुल मैच 3 हुए हैं, तो इन्होंने इनमें से 1 मैच को जीता है और 2 मैचों को लूज किया है। पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स इन्होंने इनके 3 हैं। वेल्स की बात की जाए तो वेल्स जो कि चौथे नंबर पर मौजूद है टीम, वेल्स ने 3 मैचेस का किया हुआ है सामना और 1 को किया हुआ है ड्रा और 2 मैचेस को किया हुआ है लूज। मैं बिल्कुल दोस्तों 2 मैचेस को इन्होंने लूज किया हुआ है। अगर पॉइंट की बात करें, पॉइंट्स इनके 1 हैं। ग्रुप सी की बात की जाए तो ग्रुप सी में सबसे पहली टीम आर्गेंटीना है, जो कि इन्होंने 3 मैचेस का किया हुआ है, उनमें सामना 2 मैच इन्होंने जीते हुए हैं और 1 मैच को लूज किया हुआ है। दूसरे नंबर की टीम पर अगर बात की जाए तो पोलैंड है, पोलैंड की टीम ने 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, 1 को इन्होंने जीता है, 1 को इन्होंने लूज कर दिया है और 1 को इन्होंने ड्रा कर दिया है। पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स इनके 4 हैं।
तीसरे नंबर वाली टीम की अगर बात की जाए तो मैक्सिको है। मैक्सिको ने 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, एक को इन्होंने जीता हुआ है, एक को इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है और एक मैच को इन्होंने लूज किया हुआ है। अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स इस टीम के भी 4 ही हैं। चौथी टीम की बात की जाए, अगर ग्रुप सी की चौथी टीम की बात की जाए, अगर सऊदी अरेबिया है, 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, एक मैच को जीता हुआ है और 2 मैचेस को लूज किया हुआ है। पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स 3 है इस टीम के। ग्रुप डी की बात की जाए तो ग्रुप डी की बात की जाए तो या दोस्तों ग्रुप डी की बात की जाए तो सबसे पहले फ्रांस है। सबसे पहले फ्रांस है, इनके 3 मैच हुए हुए हैं, 2 इन्होंने जीते हुए हैं, एक को इन्होंने लूज किया हुआ है, 6 पॉइंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच जीते, 3 मैच हुए हैं, 2 मैचों को जीता हुआ है और 1 मैच को लूज किया हुआ है, 6 पॉइंट हैं इस टीम के भी। तुनीसिया की बात की जाए तो इन्होंने 3 मैचेस खेले हुए हैं, एक को इन्होंने जीता हुआ है, एक को इन्होंने लूज किया हुआ और एक मैच को इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स इनके इस टीम के 4 हैं। अगर नंबर 4 वाली टीम की बात की जाए तो डेनमार्क ने 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, एक मैच को इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है और 2 मैचेस को ये टीम लूज कर चुकी है। और पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स इस टीम के 1 हैं। ग्रुप ए की बात की जाए तो ग्रुप ए में सबसे पहले टीम जापान है। जापान ने 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, 2 को इस टीम ने जीता हुआ है और एक मैच को लूज किया हुआ है। 6 पॉइंट्स के साथ ये टीम नंबर 1 पर है। स्पेन की बात की जाए तो स्पेन की टीम ने 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, एक को इस टीम ने फोन किया हुआ है यानी जीता हुआ है, एक टीम को इस टीम ने लूज किया हुआ है और एक मैच को इस टीम ने ड्रॉ किया हुआ है। पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स 4 है इस टीम के भी। जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी ने 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, एक को इन्होंने जीता है, एक को बराबर किया है और एक को लूज कर दिया हुआ है। पॉइंट्स के इस टीम के भी पॉइंट्स 4 ही हैं। कोस्टा राइस की बात की जाए तो कोस्टा राइस टीम के 3 मैचेस हुए हैं, 3 में से इन्होंने एक मैच को जीता हुआ है, 2 मैचेस को इन्होंने लूज किया हुआ है। और पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स इस टीम के 3 हैं। ग्रुप एफ की बात की जाए तो मोरक्को के 3 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, 2 को इन्होंने जीत लिया हुआ है और एक को ड्रॉ किया है। इस टीम के पॉइंट 7 हैं। क्रोएशिया की बात की जाए तो इन्होंने 3 मैचेस का सामना किया हुआ है, एक इन्होंने जीता है, 2 इन्होंने बराबर किए हैं, 5 पॉइंट्स हैं। बेल्जियम की बात की जाए तो इन्होंने 3 मैचों का सामना किया हुआ है, एक मैच को इन्होंने जीता है, एक को इन्होंने बराबर किया है और एक मैच को लूज कर दिया हुआ है। पॉइंट्स 4 हैं इसके। कनाडा की बात करें तो कनाडा ने 3 मैच खेले हैं और तीनों के तीनों ही लूज कर चुका है, इसलिए पॉइंट 0 हैं। ग्रुप डी की बात की जाए तो ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील ने की टीम ने 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, 2 जीते हुए हैं और एक हार गई है। ये एक मैच को लूज कर दिया है इस टीम ने। पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स 6 हैं। स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, 2 को जीत लिया है इस टीम ने और एक को लूज किया हुआ है। पॉइंट्स की बात की जाए तो इसके भी पॉइंट 6 ही हैं। कैमरून की बात की जाए तो 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, एक इन्होंने जीत लिया है और एक को लूज किया है और एक मैच को ड्रॉ किया है। पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स 4 है इस टीम के। सर्बिया की बात की जाए तो 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, एक को इन्होंने ड्रॉ किया है और 2 मैचेस को लूज किया है। पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स 1 ही है इस टीम का। ग्रुप एच की बात की जाए या दोस्तों ग्रुप अगर एच की बात की जाए तो पुर्तगाल है। इस टीम ने 3 मैचेस का किया हुआ है सामना,
3 मैचेस का किया हुआ है सामना, 2 मैचेस को जीता हुआ है और 1 मैच को लूज किया हुआ है। 6 पॉइंट्स हैं टीम के। साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया की बात की जाए तो 3 मैचेस को जीता हुआ है। 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, 1 मैचेस को जीता हुआ है, 1 मैच को लूज किया हुआ है और 1 मैच को ड्रॉ किया हुआ है। और अगर पॉइंट की बात की जाए तो इस टीम के पॉइंट्स 4 हैं। घना की बात की जाए तो घना की टीम ने 3 मैचेस का किया हुआ है सामना, 1 मैच को जीता हुआ है और 2 मैचेस को इन्होंने लूज किया हुआ है। इसलिए इस टीम का पॉइंट 3 है। जी हाँ दोस्तों, अगर कल के मैच की बात की जाए तो कल हमें काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिल जाएगा। कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा हमें कल इस मैच में। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मुकाबला, जो कि टक्कर का मुकाबला होने